In the age of the coronavirus, this is the new normal. We're standing on the highway between Kota and Indore, and where once there were marriage halls like this one, or there were dhabas, now instead you see doctors right here at the highway, and what they're doing is something very interesting. There's been this whole debate about why migrant workers are not being allowed to go home, and one of the reasons that has been given is, what if they're infected? What if they carry the virus with them? Well, here on the highway, not just have we met migrant workers who are still walking these roads, we've also met doctors who are now screening these workers to see if there is any telltale signs of a coronavirus infection. So let's first talk to the doctors here. Sir, अगर आप थोड़ा बताएं कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल हाईवे पे खड़े हो कि क्या कर? हमको सीएमएचओ सर से निर्देश मिले थे कि बाहर से कुछ यात्री आए हुए हैं जी, तो हमने इनकी सबकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर तो नहीं है इनको? नहीं, सभी का नॉर्मल टेम्परेचर है, सब पूर्ण तरह स्वस्थ हैं। अच्छा, तो ये मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग आइडिया लगा. दिस इज अ प्रोडक्टिव वे ऑफ हैंडलिंग अ क्राइसिस. इंस्टेड ऑफ मेकिंग माइग्रेंट वर्कर्स स्टे पुट वेयर दे आर, दिस इज द सेफ वे ऑफ अलाउइंग देम टू मूव. कैन यू शेयर अ लिटिल मोर डिटेल्स? कितने लोगों को आज आपने स्क्रीन किया? 61. तो थोड़ा बताइए यहाँ पे विस्तार से सर. ये बीकानेर और जैसलमेर से आए हुए मजदूर हैं जो झालावाड़ में आए हुए हैं, और इनकी सबकी थर्मल स्कैनिंग की है और सब सामान्य है. और अगर मान लीजिए सर किसी की निकलता की टेम्परेचर है, तब क्या प्रोटोकॉल रहता है? तब उसको सेपरेट करते हैं, उसको सेपरेट करके फिर जो है आगे जो फर्दर जैसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराना है या फिर जो उसको आगे फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन उसके कुछ कराना है तो वो उच्च अधिकारी के हिसाब से जैसे भी जो फॉलो करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन. एसिम्प्टोमेटिक भी कोई हो सकता है कि अभी उन्होंने साइंस नहीं दिखाने शुरू, पर आप सिर्फ अभी टेम्परेचर स्क्रीनिंग. हाँ, ओनली टेम्परेचर, और जिनके भी सिम्टम्स होंगे हम उनके सैंपल लेंगे, सैंपल लेके मेडिकल कॉलेज में जांच करवाएंगे. तो अगर टेम्परेचर हो तो आगे आप टेस्टिंग करेंगे. ऐसे कितने दिन से आप यहाँ पे हाईवे पे ड्यूटी पे हैं? काफ़ी दिन हो गए, कंटिन्यू से चल रही लगभग. अच्छा, हम आपको थैंक यू कहते हैं फॉर द जॉब दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग. बहुत बहुत नमस्कार हम सबकी तरफ से. नाउ दिस इज अ वेरी, एज आई सेड, द न्यू नॉर्मल इन द एज ऑफ द कोरोना वायरस. दीज गवर्नमेंट डॉक्टर्स हियर टू स्क्रीन migrant workers to make sure that they don't have temperature. If one of them has temperature, then they will be taken for further screening. Let's actually walk to the place and see who were these workers that these doctors were actually testing. And you can see here in these buses are these workers. They've been coming from within Rajasthan, and this might be a very productive way to tackle the crisis that we've been seeing even in week 5 of the lockdown. And I'm just going to talk to one of them here. कहाँ से आए हैं आप लोग साहब? नौका. कहाँ पे है वो जगह? बीकानेर जिले में. अच्छा, तो यहाँ पे आपका डॉक्टर ने सब टेस्ट किया? कर दिया. कहाँ जा रहे हैं? राजस्थान के अंदर ही? राजस्थान अंदर ही. तो अभी आप लोग छोड़ के क्यों आए बीकानेर? मजदूरी बंद होगी. मजदूरी बंद हो गई. थोड़ा आगे आके देंगे, आपकी शक्ल नहीं दिख रहा. क्या नाम है आपका? शिवलाल जी. शिवराज जी, क्यों छोड़ के आ रहे हैं बीकानेर? काम नहीं मिला, भूखा मरने लग गया, क्या करें, चले फिर. अच्छा, तो अभी क्या घर जा रहे हैं? घर पहुंचना चाहता हूँ. जब लॉकडाउन खुलेगा तो वापस जाएंगे बीकानेर? काम में ही रहेंगे? गांव में काम खुलेगा तो जाएंगे, फिर मजदूरी करवा दो. सबका आपका बुखार देखा, सबने टेस्ट किया? सबने आराम से टेस्ट किया. चलिए, आप आराम से घर जाइएगा. सो नमस्ते. So I think this, for the first time, is a constructive and productive way that we are seeing of handling the migrant worker crisis. And I'm just going to bring you back on the highway to show you what's happening here. You see police, you see the bus loads on the left side of the migrant workers who have all come from Bikaner. Now this is of course movement that's taking place within Rajasthan, and behind me the doctors whom we spoke to just moments earlier, screening each one of them to see if they have temperature, and only if somebody has temperature will they then be placed in quarantine and be taken for further testing. This might be one productive way to handle an exodus that continues. It may not be the mass exodus that we saw in the first week, but I have personally seen on this highway this morning these buses and at least two groups of men, women and children walking these streets. So this might be something that we can borrow a lesson from.